ओके सो हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी थ्योरी पेपर ऑफ स्टैंडर्ड 10th। ठीक है, कैसे स्कोर करें हम कि जिससे हमारा थ्योरी का पेपर अच्छा जाए और हमें अच्छा स्कोर मिले। सो इसका सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है थ्योरी में तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 2 मार्क का है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 मार्क का है तो 6 और 4 मार्क का रहा तो 8 पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट हाफ मार्क गेन करता है। क्लियर है? सो आज हम देखेंगे कैसे ये सब चीजों को हम फॉलो करेंगे। सो इसके कुछ की स्ट्रैटेजीज होते हैं कि हमें थ्योरी पेपर लिखना कैसे। ओके, तो की स्ट्रैटेजीज में सबसे पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। पहले उस कंसेप्ट्स को समझ लो जिसको आप प्रेजेंट करने वाले हो पेपर में। ठीक है, अंडरस्टैंड द concepts. Don't just memorize facts. Strive to grasp the underlying biological mechanism and process. ये first key point है. Second, practice diagram. Draw and label all important diagrams from your textbooks as they often carry significant weightage in the exams. Clear है? आपको diagrams अच्छे से prepare करना है. Next, make detailed notes. आपका खुद का notes बनाओ और वो हिसाब से आप उसको रिवीजन के लिए इस्तेमाल करो। क्रिएट कंसाइज एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स हाइलाइटिंग की पॉइंट्स, डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द कंसेप्ट्स। क्लियर? देन रेगुलर रिविजन्स, रेगुलरली रिव्यू एंड नोट्स योर नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू रीइंफोर्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग्स। क्लियर? पास्ट पेपर प्रैक्टिस, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स to get customized to the exam format and identify areas where you need some more practice. Okay, then clear your doubts. आपके doubts को clear करो, आपके टीचर से बात करो और अपने doubts को clear कर लो। clear है? Then time management, which is one of the most important key point in your paper. आप चेक करो कि आप 4 मार्क का क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हो। क्लियर है? So these are the main key points in theory paper. So let's take one example. Okay, the question is, if 4 mark question is asking to you, explain the process of photosynthesis with a labeled diagram. So how would you answer it? So your answer will be like, first you have to write the definition of that particular question. For example, photosynthesis is the process by which plants use sunlight and water and carbon dioxide to produce glucose and oxygen. This process occurs within the chloroplast, green organelles found in the plant cell. So you have to write this proper definition first of all. Then draw the labeled diagram of a chloroplast with key parts like thylakoids, grana, stroma and overall processes. For example, like this, you have to draw this diagram and label it very particularly. Okay, and do not forget to write the figure number and the name of the figure. Okay, next point is you have to explain what is the question is asking you. You have to explain it. Okay, like light absorption, sunlight is captured by the chlorophyll pigments with the thylakoids, which then initiate the conversions of light energy into chemical energy. Next, electron transfer, electrons are transferred along the electron transport chain generating ATP and NADPH. Okay, and then you have to write carbon fixations. CO2 fixations in the atmosphere is fixed in organic molecules using the energy from ATP and NADP in the Kelvin cycle, ultimately forming the glucose. And by covering all these points, you have to end your answer with hence. In this way, the photosynthesis process occurs. Okay, and in this way, you have to score a very perfect marks in your paper. So thank you, and that's all for today.